सभी को अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बोनू परमे और मैं आप लोग को बता दूँ, आज हम लोग एक प्रोग्राम पे आए हैं जो हो रहा है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जो जयपुर विलेज है एट नरेसर रातान लोतोंग गुदू नोटको पे जयपुर विलेज पे है ये। और यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो है ABK एनुअल कॉन्फ्रेंस, और इसमें कुछ रेजोल्यूशन भी पास किया जा रहा है। तो जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या क्या रेजोल्यूशन रखा गया है, सीनियर्स लोग से जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं उन लोगों से। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का मकसद ये है कि समाज में जो आदि समाज में हम लोग आदि बाने केबांग का अंदर में जितना भी लोग हैं उन लोगों को बुला के हम लोग जो ABK टीम जो लीडिंग टीम है उनका विचार और इसको रिएक्शन के लिए जितना भी लोग हमारा आदि बेल्ट एरिया में है उन लोग को सुनाएगा और उन लोग का सजेशन हम लोग लेगा, एडवाइस लेगा। और हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या मेरिट्स होता है, डीमेरिट्स होता है, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोल के हम लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाता है। और इस जहाँ तक आपका प्रश्नों का सवाल है जो किन मुद्दों पर आप लोग ने ये कर रहा है ये बोला, तो इसमें हम लोग कॉन्फ्रेंस में खास करके हमारा जो आदि बेल्ट एरिया में जितना भी जैसे मतलब यंगर जनरेशन के लिए बेटा बेटी लोग के लिए ऐसा एक बीमार फैल रहा है कि जो ड्रग्स मैनेज जो हो रहा है उसको मतलब कैसा डील करेगा, इसको कैसा अगेंस्ट करेगा और क्या स्टेप लेगा, यहाँ में हम लोग चर्चा होते हैं। इसके बाद में हमारा आदि बेल्ट में हम लोग जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जानवर को चिड़िया को यहाँ बहुत मतलब स्पेसिस हम लोग जब सुता से देखा हुआ आज नहीं मिल रहा है, इसको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो चिड़िया नहीं मारना चाहिए, जानवर नहीं मारना चाहिए और कोई भी मतलब जो जानवर होता है जितना जीव जंतु है हम लोग नहीं मारना चाहिए बोल के यहाँ में हम लोग चर्चा होते हैं। इसके बाद में एजुकेशन का बारे में या हेल्थ का बारे में या हम लोग समाज को कैसे करने से मतलब दूसरा समाज का जैसा मतलब अच्छा हो जाएगा, ये सब चीज़ का हम लोग डिस्कस होते हैं ये कॉन्फ्रेंस में। और ख़ास करके जो आप पूछा है जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी आया, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कल हेल्थ के बारे में कैसा मतलब गवर्नमेंट का तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट लोग कैसा पब्लिक को यूज़ को हेल्प करता है, ऐसा चीज़ कल ये बता दिया है। और ऑनरेबल MP भी ये बताया कि जहाँ अपना डायलेक्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, अपना डायलेक्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए, दूसरा डायलेक्ट में मतलब जैसे मतलब ज़रूरत में होना चाहिए, दूसरा डायलेक्ट को जानना चाहिए, हम लोग एजुकेट करना चाहिए, लेकिन अपना एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग ओन डायलेक्ट दूसरा ये लैंग्वेज को नहीं होना चाहिए, अपना भी जानना चाहिए, दूसरा का भी जानना चाहिए बोल के MP साहब ने बताया और ये हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया। हम लोग का और इस टीम का आदि बाने केबांग का प्रेजेंट टीम का स्टैंड ये है, हम सिर्फ दाम का बारे में नहीं, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम लोग रुकावट नहीं देंगे। हम लोग सोचते हैं ये जो दाम बनाएगा, जो हम लोग जो गवर्नमेंट है स्टेट का हो या सेंटर का हो, ये पीपुल्स गवर्नमेंट है, ये डिक्टेटर नहीं है, पीपुल इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाया हुआ है। तो ऐसा लीडर लोग तो पब्लिक के लिए तो सोचेगा, इसलिए हम लोग ये दाम जो भी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट का हम लोग वेलकम करता है। और जहाँ तक ये दाम अभी जो सियांग डैम का मेगा डैम का इशू का बारे में बोलने से, इसमें हम लोग का स्टैंड ये है कि हम लोग अभी इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ABK लोग अच्छा से मालूम नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स जानने के लिए अभी समय भी नहीं है। अभी सबसे पहले फिजिबिलिटी होता है कि नहीं होता है, सियांग में दाम बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ये पहले देखना चाहिए। और गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट ये करता है कि ABK के तरफ से
पहले आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पहले देख लीजिए। अगर फिजिबल नहीं है तो वंस फॉर ऑल वो इशू तो ख़त्म हो जाएगा। अगर फिजिबल है, गवर्नमेंट शुड इनिशिएट डिस्कसिंग विथ द विक्टिम पीपल। वहाँ पर जो जितना भी लोग है वहाँ का जो दाम में इफेक्टेड होगा उन लोग से बात कर लेंगे, उन लोग को समझाएंगे कि ये दाम बनने से ऐसा मेरिट होगा, अच्छा होगा और फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, या ये दाम बनने से ऐसा डिमेरिट होगा, ये ऐसा ख़राब होगा फ्यूचर के लिए। ऐसा इसमें डिस्कशन करके अगर वहाँ मेजोरिटी हाँ ठीक है ये तो बहुत अच्छा बात बोलने से कंस्ट्रक्शन करना है, अभी अगर ये मेजोरिटी नहीं ये ख़राब है बोलने से कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वो बाद में आफ्टर डूइंग this thing survey and investigation of the project. That is our opinion of ABK till now. अच्छा, इसके बाद में जहाँ तक ये जो आदि वेलफेयर सोसाइटी का सवाल है, इसमें मैं जवाब देने का दिल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक सम 3-4 पीपल का बैठ के एक बेस्टेड इंटरेस्ट है। उन लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उन लोग all the members of ASW are involved in politics. They are office bearers of political parties. The political parties will always speak for their own political party. They will never speak the common issue. They will only favor their party, and they are belong to political parties. That's why I don't want to say that they are good or they are bad. I don't want. They are only some 6-7 vested interested people are doing that, and it has nothing to do with the mandate of the Adi Baane Kebang and Adi people. First of all, thank you the media team for coming and covering us the event. It's not a general conference, it's the annual conference of Adi Baane Kebang, which we usually have every year annually, wherein we have to give back the annual report to the people of our community. The rest things you might have witnessed how the 3 days they have passed. Today is the last day. And how and why we are holding this, the competent authority right now at this moment, I believe would be the Vice President of our Adi Baane Kebang, who also is the chairman of this annual conference, Mr. Mibom Patel. सर आपका भी स्वागत है अरुणाचल एक्सप्रेस में। Thank you. सर ये आज का एनुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना चाहेंगे। As you said, we are holding the annual conference here in Namsai. So with the Adi Baane Kebang, we have a tradition that wherever our Adi people inhabits, so we held our conferences there. So we have held a conference right in the China border also, in Mechuka, Tuting, and the Namsai border area of Assam. So this time we are organizing a program in Namsai. So like that, the people of Namsai, Adi people, they will be confident that there are Adis in Adi area, in other areas also, and moreover, our presence all over Arunachal will be felt. So it is a very successful program here. I have seen the crowds, which on other conferences, the crowds are very impressive here. So with these few words, I end up the speech. And if any more other things to be said, so our spokesperson, you can add. I really appreciate. He spoke about geotagging of certain materials, customs, the ornaments or the handloom and handicrafts, even the crops that we have with us, that we have carried from our forefathers from generations to generation. So that geographical indication, in short, that's GI. That was what he spoke about yesterday. So we are, Adi Baane Kebang is on the process of applying for the GI of some of our handloom and handicraft products.
and even some of the crops that which we have exclusively the Adis only use, like the Adi Galle, the Adis only exclusively use it in the entire planet. No other tribe or people use it. So we are applying the geographical indication for that, which by now it's under process, and about some crops and about some handloom and handicraft things. That was it. The government also is very helpful, cooperative here. Those competent authorities, the officers in this concern are also very encouraging. We have approached them, and then it's in the process, and we hopefully believe that certain products that we have inherited from our forefathers from generations to generations, exclusively owned by the Adis, we are at the right to get the GI tag as exclusively by the Adis. That's it. And some other questions? There is no doubt that Adi Baane Kebang is doing a trade for the betterment of the Adi community. So what would you like to comment on? As our organizing chairman has said, the annual conference, obviously it's held just for a reminder to the community to unify our thoughts and unify our movements for the social upliftment of the Adis. And herein in the annual conference, what usually we do is we come together as one, and then we discuss the problems and the issues that we face in our community, in the far-flung places, even in the mainland Adi areas. We move those things as proposals and bills, then we put to vote. Those adopted would be apprised to the government, and we, the Adi Baane Kebang, will follow up with those resolutions and bills that we have adopted with the government or the competent authority wherein it can be addressed. Basically, it's for unification, it's for development of the community as a whole, and then it's also a process wherein we also think and we also discuss and debate for the welfare of the states and the other tribes of our state. That's the general motive, the main theme of the annual conference of the Adi Baane Kebang. And secondly, in addition to his point, our main purpose is to discuss on our social reforms, because our society in this modern world, we are slowly losing our culture, traditions. So one of the purpose is to preserve the traditions and the culture of Adis. That's it. सर ये आखिर में और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, आपने ट्रेडिशन इन कल्चर का बारे में मेंशन किया, तो सर ये आपके स्पीच के दौरान आपने ये सितंबर 1 आपका सोलंगी डेट के बारे में भी डिस्कस किया, सर उसका रिजल्ट क्या निकला है? No, we have adopted, the house has adopted that the Solung festival would be celebrated in the district headquarters, in the ADC headquarters, in the CEO or ESC circles on 1st of September, which is notified by the government of Arunachal Pradesh. But the villages, they have their own liberty to celebrate Solung on any date, because basically Solung is a festival celebrated to thank Kinenane, pray, worship Kinenane when after sowing of the rice seeds, when the saplings come to some 5-6 inches, then we have to offer a prayer to Kinenane for prosperity, for the success of the crops. So the sowing time differs from village to village or region to region. Like the Upper Siang sowing time would be different from the West Siang or Siang district sowing time. So then as the sowing time differs, the growing up or coming up of the saplings also would obviously differ. So therein, the villages, they celebrate Solung as per the height or the growth of the paddy saplings. There they have their liberty, they have their right to celebrate Solung at the time opportune, at that very time when the crops are needed
to be placed at the altar of Kinanane when we pray her. But in the district headquarters, I repeat, district headquarters, ADC circle, CO or ESC circle, the Solung has to be celebrated on 1st September, Notified by the government. which is notified by the government of Arunachal Pradesh. Why? I have said it, clarified it today also, because the government has certain tourism calendar, annual tourism calendar according to the materials that, according to the tools, the government sells the state events to the outside world. So therein it is clearly notified the 1st September. So tourists, they come, and we shouldn't be displacing the tourists when they come to see or participate in Solung or any festival which is notified by the government. It's a generic term, generally I'm speaking. Every festival in Arunachal Pradesh, Solung included, should be celebrated on the date given by the government of Arunachal Pradesh. Why? Because tourists, national, international, they come to witness the festivals of Arunachal Pradesh. So when we shift the date, those tourists coming from far-flung areas, after obtaining RAF, after obtaining ILP, when they come, they don't get to witness the festivals. They'll feel bad and sad also that we should not allow our guests. So it was unanimously again decided that Solung from this time onwards should be celebrated on from 1st of September only at the district headquarters, at the ADC headquarters, at the CO, ESC level. In the villages, they have the liberty to celebrate as per the growth of the crops. और यहाँ आदि सोसाइटी में हमको क्या करना चाहिए, डूस एंड ये सब को हम लोग यहाँ चर्चा होता है। और यहाँ मेरा इन लोगों से ये रिक्वेस्ट था कि आदि को बचाए रखने के लिए, आदि डायलेक्ट्स को बचाए रखना चाहिए, तो इसके लिए हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। साथ में हेल्थ एक इम्पोर्टेंट जगह है, जिस हेल्थ सेक्टर को इसको हमको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये आदि बाने केबांग भी इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर को हम कैसे आगे करें। साथ में हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमको छोड़ना नहीं चाहिए। आदि बाने केबांग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स को ये करना चाहिए। साथ में आदि बाने केबांग पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को इन्वॉल्व होने नहीं देना चाहिए। पॉलिटिक्स में बहुत सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन कोई रिलीजन इशू को लाके अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज का इसमें होने नहीं देना चाहिए कि आदि बाने केबांग जो है अपना फोरम से, अपना काउंसिल से, अपना अथॉरिटी से मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इन्वॉल्विंग रिलीजन्स, ये सब को करना चाहिए। और एक जो है जीआईटेक एक ये साइंटिफिक सिस्टम है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशंस होता है। जैसे आप एक आदि गालुप पहन रहा है, हम आदि गालुप पहन रहा है, इसको हम जीआईटेक करेंगे तो सारा दुनिया जान जाएंगे कि ये इस लोकेशन में अरुणाचल प्रदेश का इस बेल में ये आदि गालुप जो है यहाँ का है, आदि ट्राइब का है, हमारा आदि माला है, हमारा आदि का जितना भी हमारा एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टीज़ है, हम जो मॉडिफाइड, हम जो आदि समाज पहनता है या यूज़ करता है, इसको हम जीआईटेक करेंगे तो सारा दुनिया जानेंगे। इस जानकारी के लिए मैंने हर आदि का जो जितना ट्रेडिशंस है, एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टीज़ जो माला वगैरह है, वो सबको जीआईटेक इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक इसको आप जीआईटेक नहीं करेंगे तो कल बिहार के लोग भी आके बोलेंगे कि ये मेरा जैकेट है। तो ये एक जोग्राफिकल इंडिकेशंस का एक सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नोज कि हाँ ये इस कम्युनिटी से है, इस जगह से है, एक पहचान है।
तो इसलिए जब तक इसको नहीं बनाएंगे तो दुनिया का सामने में हम इसको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। ये ओके।